Good evening, guys. Welcome to JV's IAS. Welcome to a session on anthropology. So today we are on time. Last time we had little bit of hitch and we could not come on time. So in this session, what we are going to discuss is the very first unit of anthropology in your UPSC. The name of the unit is Meaning, Scope and Development of Anthropology. So here, what we are going to learn, the learning objective of this particular lecture is that first we will understand the meaning of anthropology. What is the meaning of it? What is the proper definition of it? What kind of definitions have been given by different anthropologists? Okay. Before I go further, just a quick confirmation from your side, either in the chat or any mode, you just give me my voice, video and the stream, everything is okay or not. If it is not, we will take care of these things. Very good evening, Shubham Chakravarti. Just give me a confirmation my voice is clear or not. Okay, well, thank you. We got the confirmation. Yes, then what we are going to learn in this particular lecture is the nature of anthropology. Like as a stream, as a subject, what is the nature of it? Then we will be looking at the scope of anthropology and uniqueness of this anthropology. Why as a stream it has a separate characteristics? Why it is unique even though we have many sciences, many streams? So compared to them, what makes it different? What are its present relevance in the contemporary times? So that is our third learning objectivity. Then the final one is the development of anthropology as a branch of science, as a stream. What are the different stages? Exactly when it started as a stream, or beach mein, what are the differences that have happened and how different people have contributed for the growth of this anthropology. This we will be having a subtopic related to the growth of anthropology in India or Indian anthropological growth in paper 2. But here what I am going to keep is, here I will be keeping it to the development of anthropology as a stream worldwide. So we will be looking from a different perspective, different schools of thought, what they have given, how they have defined, how they have contributed for the growth of anthropology. So these are our learning objectives. If you have attended the earlier session where I have given the micro listing of the syllabus, वहाँ पर हमने क्या देखा था? What is the meaning of anthropology? Sub branches of anthropology, that is in brief. Then segregation of the syllabus. Then the strategy, how to cover this for UPSC examination. ये वाला देखा है. So from here onwards, we will be going properly into the syllabus of anthropology and we will try to understand what is there in anthropology. And again, I'm just reminding you guys, जब हम anthropology as a subject, as an optional subject पढ़ रहे हैं, our answers, our understanding, more clarity on the understanding, conceptual clarity on the understanding, it should be in such a manner that it should be scholarly. As a student of anthropology, how we are going to learn this subject, in that manner your clarity has to be there. Because in the examination, the questions are going to come in that kind of like the need of that questions or the need to answer those questions, the demand of those questions will be of that form. इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डीप जाकर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनका थिंकिंग एंड उनका कंट्रीब्यूशन एंड उनका डेफिनेशंस क्या है इस तरीके से कवर करेंगे. सो दैट इज अ वर्ड ऑफ एडवाइस बिफोर एंटरिंग इनटू दिस सब्जेक्ट. ओके, सो वंस अगेन very good evening to all. Okay, let us begin. As I said, first let us understand the meaning of anthropology. Now before entering into that meaning of anthropology, I want to give you this. Have a look at it. Many of you have like at least read or heard or at least seen in movies or clips this event which has happened in the life of Mahatma Gandhi. It is also said that before this event, before throwing him out of the train, even after having a first class ticket,
because of his color, because of his like the race. So that is when the people famously say that is where Mohandas Karamchand Gandhi has turned out to be Mahatma Gandhi. Like that is where the thought of Mahatma Gandhi that this discrimination, this racial discrimination has to be checked, it has to be ended. So that thought has come. So have you ever wondered, like when you look at these events, why such sort of a discrimination is there? Why people, we say generally all the human beings are equal, but still why there are these sort of discriminations based on the color, based on the height, based on the physique, based on the intelligence? So why such sort of discrimination, and what leads those discriminations have, and उनका जो ये discrimination जो है उनका you can say larger problems क्या है, and how those discrimination or other variations, जैसे humanly variations है, even if you see no two persons are identical unless they are twins, that too monozygotic twins, otherwise they are not identical. So if they are not identical, why that variations have come into picture? Has it come to your mind at any point of time? So if it's so, that is what we are going to learn in the human genetics of biological anthropology here. We will be looking at what are the reasons for different variations in the body. It may be genetic or it may be the physiomorphic changes. So what is the cause behind it? What are the contributors for such a changes? Those things we will look at it. And have a look at this one also. See, in the world, not only the physical variations, the cultural variations, the practices that we do, they are also of varied forms, diverse forms, the kind of clothes that we wear. So even in India, if you see, from location to location, the attire changes. जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं, ठीक है, the variety, the cuisine, the kind of खाना, okay, all of them they vary. Even the institutions like marriage, even though marriage is present in all institutions, all societies, but the marriage ceremony, the kind of marriage that vary from one society to another society. Similarly, the family. So why such sort of variations are there? So these are the answers that we are going to find throughout these discussions. We will try to look at how those variations came into being. Like उनका origin कैसे हुआ है, origin होने के बाद evolution कैसे हुआ है, उसमें क्या क्या changes आया है. These are the things we will be looking at. So this is like to generate that interest, how the subject is going to these sort of problems, how this is going to deal with them, how it is going to define them, how it is going to distinguish them. That is what we are going to learn in the coming lectures. So in this particular lecture, as I said, we will be looking at the meaning of anthropology. If you can recall, इससे पहले वाला क्लास में बताया था मैंने, see, there is inherent curiosity of human beings about themselves. I want to know how I came onto this earth. What are the variations that have happened? What are the contributions? Now I am speaking this language, I am wearing this clothes, I am having a particular way of my lifestyle. How this lifestyle came into being? Who has initially taught that? How this came into like existence? ये वाला क्वेश्चंस जो है, जो हमारा माइंड में आता है, उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ढूंढते they have developed a particular stream called anthropology. Okay, and anthropology, as I said, etymologically, like what I said etymology in the last class, etymology means it is a study of the origin of the words. So etymologically, how this word has come into being, who has cited this word, what is the meaning of this word? See, this word comprises of two smaller words. One is anthropos. The meaning of anthropos is humans, and another one is logos, which means science of or study of. Together, in a simple words, anthropology is nothing but science of human beings or study of human beings. So this word has been coined by one of the great thinkers, Aristotle.
He has also given a definition for anthropology, which we will see in the next slide. Okay. Apart from that, is there any general definition? अगर एग्जाम में आंसर लिखना है, of course we will be writing some of the specific definitions given by anthropologists. Apart from them, you can have a general definition what you understood. So based on that, I have kept some of the general definitions here. Have a look at it. The second one says it is the holistic study. So here I am introducing one more word called holistic. What is the meaning of holistic? It means being as a whole, a comprehensive. That means जहाँ पर भी humans involved है, we will try to study about their behavior. We will try to study about their involvement, why they are involved there, what they are doing there, and how they are doing it. What is the significance, what is the linkage, ऐसे जो questions और उसका answers, those are the things which has led to the holistic study of human beings. For example, nowadays in this modern era, human beings are very much engaging in the space science. ठीक है, space activities, satellites भेज रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ से communication वगैरह ये सब चीज़ें चल रहे हैं. So can we have a link of anthropology with the space science? Yes, it is possible. Because that is the beauty of this subject. It is not going to restrict its scope. It has ever expanding scope. क्योंकि जहाँ जहाँ पर human beings are involved, we can apply this. See, let me give that example. जहाँ पर अभी space technology का बात कर रहा हूँ, like space. One of the branches of anthropology, one of the streams, which is called the space designing. एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है. तो वो क्या करता है, बॉडी का मेजरमेंट्स वगैरह लेकर जो इंसान वहाँ पर एस्ट्रोनॉट हो या पायलट हो, जो कॉकपिट में बैठता है एरोप्लेन का या रॉकेट का, वो जो नोजल है जहाँ पर बैठ के दे विल गो टू दैट स्पेस, उनके हिसाब से वो वाला स्पेस को डिज़ाइन करना पड़ेगा. They have to manage everything within that small space. For that they need to know what is the movement of the body, what is the size of the body, what is that person type. ये सारी चीज़ें वहाँ से वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है. Designing anthropology you can say. So there is like expanding scope. So that is when we say it is holistic in the sense that it can be applied to any field, any stream where human beings are involved, ठीक. And human beings living in societies, see those who are from the sociology background or who know or who have read about societies or sociology, they know that sociology talks about the contemporary societies, how they are like cross comparison करते हैं. यहाँ पर ये वाला particular let us say Indian society and American society, how they are different, how they are similar, what are the elements, ऐसे करके comparison करता है. वो वाला same comparison is also done by anthropology, but not only that, it also try to compare in the particular area with respect to the past societies, ठीक है. जो contemporary Indian society जो है उसका जो पहले वाला Indian society है उसके साथ compare करेगा. तो पहले वाला कैसे है, अब कैसे है, क्या variations हुआ है, क्यों हुआ है. So these things, that's why again it is holistic in the nature. And it also talks about the human beings living in societies following a particular distinctive way of life. This distinctive way of life is nothing but your culture, like how you live, how you behave, how you like do particular task, or how you wear a cloth, or how you eat. All these things are part and parcel of your culture, like the body attire, the kind of involvements that you have, all of them part of culture. So that is where this anthropology, we were saying, it is a holistic study. It studies about the humans who are living in societies as an association and who have a culture. That is one more general definition of anthropology. Then apart from that, there is, look at one more general definition. It talks about the scientific and systematic study of human beings in totality. What is the meaning of totality? Totality, like here holistic. Similarly, totality means with respect to time,
as I was giving the example, इससे पहले थोड़ा पहले I was saying कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सोसाइटी का ही कंपैरिजन नहीं है, इससे पहले फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड और इवन बिफोर दैट जैसे स्टोन एज का पीपल जो है उनका सोसाइटी कैसे है कंपेयर करना स्टार्ट करेगा. देन दे विल ट्राई टू लाइक ब्रिंग आउट द पॉइंट्स, कॉमन सिमिलैरिटीज क्या है, वेरिएशंस क्या है, अगर वेरिएशंस है तो किस वजह से वेरिएशंस आया है. ऐसे टाइम स्केल में दे विल ट्राई टू स्टडी द पास्ट, द प्रेजेंट, इवन टू सम एक्सटेंट इवन द फ्यूचर. फ्यूचर में कैसे रहने वाला ये सोसाइटी, आगे वाला जनरेशंस कैसे होने वाला है, ऐसे टोटलिटी में टाइम स्केल पे कवर करता है. एंड नॉट ओनली दैट, इन द जियोग्राफिक रीजन एज वेल. अमेरिका में क्या होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंडिया में, रशिया में. So different regions में what is the evolution, how these variations have happened, ऐसे करके totally geography wise, like space wise and time wise it will try to cover everything. Okay, so that is why we say it is the systematic and scientific study of human beings. तो यहाँ पर मल्टीपल लाइक यू कैन ब्रिंग आउट एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड सी एक साइड आई हैव एडेड दिस इमेज. इट टॉक्स अबाउट लाइक इन योर प्राइमेटोलॉजी इट टॉक्स अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट्स. स्पीसीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है और उनमें वन ऑफ द स्पीसीज इज होमो सेपियंस. उनसे पहले जो लोग थे उनका क्या नाम है, उनका बिहेवियर कैसे था, उनका कल्चरल हैबिट्स कैसे था, उनका बॉडीली स्ट्रक्चर कैसे था, ऐसे करके कंपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव अनाटॉमी. कंपैरेटिव अनाटॉमी वी विल स्टडी अबाउट इट इन अ सेपरेट चैप्टर. लाइक वी हैव इमर्जेंस ऑफ मैन 1.4 एंड प्राइमेटोलॉजी 1.5, उसमें कवर करेंगे. वहाँ पर डिटेल्स, छोटा छोटा सा माइन्यूट डिटेल्स को भी एम्फसिस करके स्टडी करेंगे. देन सिमिलरली कल्चरल वेरिएशंस एज आई वाज सेइंग, उसके बारे में डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स कैसे इवॉल्व हुआ है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वहाँ पर ओरिजिन होने के बाद या एवोल्यूशन होने के बाद कैसे चेंजेस आते रहा है उसमें. दीज आर द थिंग्स वी विल बी लुकिंग एट. सो एज ए होल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस. But humans are involved in many great number of fields, so everywhere humans are engaging, we will try to link the study of this anthropology and try to look at from the anthropological perspective. जैसे political organization, economic organization, religion, or it may be ecology. What kind of a link ecology has with the humans? How humans are involved, how humans are modified, how humans are adapted to the ecology. वहाँ पर ecological anthropology करके एक टॉपिक है which is like given by Julian Stewart. Please remember such names when I am referring to them, क्योंकि ये वाला names UPSC एग्जाम में लिखने से we get like extra like appreciation, at least if not the marks. ठीक है. Julian Stewart, he was one of the neo evolutionist. इनका कहना है कि जो ह्यूमनली बॉडीली वेरिएशंस जो होता है, कल्चर में भी जो चेंजेस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस. he was giving lot of examples and lot of case studies. We can take some examples like the people who are living in the mountainous regions or the Himalayan regions जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो उनका कल्चर देखो, they wear like thick clothes. ठीक है, उनका डाइट में भी थोड़ा चेंज होगा, बॉडी टाइप में भी कुछ चेंजेस होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी कैन लिंक दैट द एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ये हो गया एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल डेफिनेशन. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? Is there a universal definition? Is there a one true definition for anthropology? That is the next question. So many people have attempted to define anthropology from their perspective. ठीक है. So let us look at some of the definitions given by great anthropologists, great thinkers, like moral thinkers हो सकता है या sociologist हो सकता है. Let us look at them. The first and foremost one is Aristotle. Actually he is the one who coined the term anthropology. So according to him एंथ्रोपोलॉजी इज गॉसिप. जैसे गॉसिप करते हैं ना, किसी के बारे में कुछ बोलना. सो इट इज अ गॉसिप. गॉसिप अबाउट व्हाट? इट इज अ गॉसिप दैट रिवॉल्व्स अराउंड मैन.
Man means here human being. And he says that anthropologists, they are what? They are the gossipers who talks about humans. That is what the definition given by anthropology. So this was like even before the normal era, like BCE. Around he was there in 4th century BCE. उस time की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Then lot of changes have happened. The scope of anthropology started evolving. Then came the definition given by Immanuel Kant. अगर आप ethics पढ़ा है, उसमें moral thinkers में Immanuel Kant आएंगे. He has given deontology, duty ethics दिया है. तो उन्होंने he defined anthropology in a different perspective. He says that anthropology is study of which describes and explains the animal origin. See, human beings are animals, but we are social animals. Okay, biologically we have originated, we have evolved from an animal, from an ape. Okay, so that's why he was saying it studies and describes and tries to explain the animal origin of the humans. Okay, and social, cultural development and progress of human beings. कि कैसे सोसाइटी एंड कल्चर उनका ऑरिजिन हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है एंड हाउ इट गॉट प्रोग्रेस्ड, उसके बारे में स्टडी करता है. दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय इमैनुअल कैंट. देन E.B. Taylor, please remember this person is very important for us. He is also known as father of modern anthropology. His contributions are great. He has done lot of cross cultural comparisons. Okay, almost 285 societies को compare किया है उन्होंने, ठीक. So he says that he gives the definition. Look at the definition one by one slowly. Okay, in between if you get any doubt, do put it in the comment box. Duly I'll represent within a time lag, like after 10 or 15 minutes or so I'll represent and I will explain your doubts. Okay, so according to E.B. Taylor, he says that it is the study of old remains. मतलब जैसे फॉसिल्स वगैरह है या कुछ भी उनका आर्टिफैक्ट्स है या उनका कल्चरल फैक्ट्स है, जो एको फैक्ट्स है वगैरह, जो पुराने लोग जो है एक टाइम पे जो रहते थे, दोज पीपल वॉट एवर द लेफ्ट ओवर्स ऑफ देम, देयर बॉडीली रिमेन्स हो सकता है, स्केलेटन्स वगैरह हो सकता है, या उनका कुछ भी टूल्स वगैरह हो सकता है या पॉटरी हो सकता है, उनके बारे में स्टडी करना है. एंड द फिजिकल फीचर्स, उनका फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, एंड फिजिकल फीचर्स, रेसेस, languages, customs and practices of primitive people. So here another new word. What is the meaning of primitive people? It means the tribal people, that is the indigenous people, the aboriginal people. Okay, so they are called the primitive people. So look at the definition. He says that anthropology focuses on ancient remains and the primitive people, the present generation में जो primitive people है, tribal people है, उनका customs, physical features, languages, races, इनके बारे में study करता है. So by giving this definition, he has narrowed the scope. That now, just now, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि anthropology का scope जो है day by day extend होते जा रहा है, expand होते जा रहा है. But if you look at this definition, you will say, sir, ये तो कह रहा है कि पुराने people के बारे में study करेंगे और contemporary times में सिर्फ ट्राइबल पीपल के बारे में स्टडी करेंगे. सो दैट हैज नैरोड द स्कोप. दैट्स वाई ये वाला डेफिनेशन को इतना ज़्यादा मानते नहीं है, बट इट वॉज वन ऑफ द अर्लियर डेफिनेशंस. दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड हियर एंड यू कैन कंपेयर इट. वहाँ से लेकर आगे तक क्या क्या चेंजेस आया है. बाय द टाइम वी कम टू दिस डेफिनेशन, यू कैन कंपेयर कितना एक्सपैंड हो गया है उसका स्कोप, ठीक है. Then another definition given by Jacob and Stern, they say that it is the scientific study of physical, social and cultural development. Physical in the sense how the body got developed, what changes have come in the body of a human, and social means how the social integration, the society, the association has happened. Cultural means how the people are living, what is the way of the life, the routine life and different customs and practices they are performing, how they developed, and based on that what is the behavior of the human being. He is adding one more element. Look at this behavior that is related to our mind, our psychology. That element has been added. Now you can say anthropology also is linked to psychology, the cognitive behavior of the human being. So one more expanding of the scope of anthropology. Behavior of human beings since their appearance on the earth. जब से उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट अपियर हुआ है
स्टार्ट हुआ है, उनका ओरिजिन, वहाँ से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आया है बॉडीली, सोशली, कल्चरली एंड इवन दिस साइकोलॉजिकली. ठीक है, व्हाट चेंजेस हैव कम, दैट इज डेफिनेशन गिवन बाय जैकब एंड स्टर्न. देन लुक एट अनदर डेफिनेशन गिवन बाय क्रोबर. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ men and their behavior and production. So production is another element which is added here. So generally we use production to produce some goods or services, something. ठीक है, क्रिएट करने के लिए है. तो यहाँ पर इकोनॉमिक सेंस भी, वो वाला यूटिलिटी भी वी आर एडिंग इट. एज ए रिजल्ट one more addition has been added to anthropology. Then the last wala definition dekho, which is very much general, very simple but very general, which has like universal application. You can expand it to any levels. So it says that study of man at all levels of development. See here two things, at all levels and development. Development here they are not mentioning whether it is biological development, a social development, cultural development or economic development, political development. Nothing has been mentioned. That means it is left to you. You can think, you can bring any such sort of developments where human beings are involved and at all levels. So this brings that holistic nature. It may be past, present, future, it may be geography, it may be any sort of level where human beings are involved. So this is much more like modern definition given by some of the anthropologists, particularly 20th century में जो anthropologists हैं, for example Malinowski, Fraser, Radcliffe Brown, etc. इन्होंने दिया हुआ definition है. Apart from that there are many other definitions, you can go with those definitions, but at least इनमें से कुछ standard definitions याद रख लीजिए. So जब क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, वहाँ पर आप अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक चीज़ लिख सकते हो, एक डेफिनेशन लिख सकते हो, और साथ साथ में यू हैव टू प्रोवाइड द डेफिनेशन गिवन बाय द एक्सपर्ट्स लाइक दोज हु हैव एक्चुअली डेवलप्ड दिस फील्ड. उनका एक आधा डेफिनेशन लिखकर वहाँ पर उनके बारे में बताना होगा. सो दिस इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. नाउ लेट अस लुक एट द नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, so there was like when the anthropology was developing there was a debate कि anthropology उस टाइम पे you have like social sciences, ठीक है, and you have the basic sciences, biological sciences, life sciences, earth sciences, ऐसे different में segregate कर रखे थे. Now the question came, there is a new evolution of the new branch, new science which is talking about humans. Now there is a debate, अगर ये वाला anthropology as a science stream मानना है तो will it be going into the biological sciences or will it be going into the social sciences? क्योंकि डिबेट है. Anthropology is studying about the biological features of the human being, not only human being, other creatures as well, other primates as well. जैसे चिंपैंजी, एप, इनके बिहेवियर के बारे में, उनका बॉडीली स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करते हैं. तो एंड जेनेटिक्स के बारे में, लाइक सी इन द ह्यूमन बॉडी द वेरिएशंस विच आर हैपनिंग, व्हाट आर द रीजन्स, what are the genetic variations, what are the chromosomes, and then different diseases because of it, what is the meaning of inherited diseases क्या होता है, ये सारे चीजें पढ़ रहे थे. all of them have links with the biology. So some of the people said कि ये biological science है, but another sphere which is talking about the society of the human beings, the social development, the culture. So वहाँ पर डाउट आने लगा कि सोसाइटी वगैरह जो है, these are the social sciences, so you are studying about the society. See, look at here, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट पीपल और उनका कल्चर, उनका कस्टम्स क्या है, ऐसे करके सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं. So there was a debate, should we consider it under social science or should we consider it, since we are covering the biological features of different human beings and different species related to human beings, so should we consider it as biological one? So after much discussions and debates, finally they said that the nature of the anthropology is both biological and sociological. So it is a socio or biosocial nature or biosocial science. It is of that nature because we are considering both biological ones and social ones. Okay, so that is the first point related to the nature of anthropology. Then look at the studying of the anthropology. अभी इससे पहले we have seen that
एंथ्रोपोलॉजी जो है इट स्टडीज होलिस्टिकली and different aspects of human beings at all levels. So if it is so, the nature is comparative. What is the meaning of comparative? It is cross comparing. Comparing not only the contemporary ones. देखो, let me give the example. Indian society, American society, I have taken the example. I am discussing related to them only. Now American society, Indian society, इन दोनों का culture ये सब contemporary times पे, present time पे compare करेंगे, ठीक है. नॉट ओनली दैट, अमेरिकन सोसाइटी का जो पास्ट है, उससे पहले जो वहाँ का इंडिजिनस पीपल है उनका कल्चर, और इंडियन कल्चर भी पास्ट टाइम्स में लाइक डिफरेंट अदर पीपल, उनके साथ वो भी क्रॉस कंपेयर करेंगे. विद द कंटेम्पररी इंडियन कल्चर वी विल बी कंपेयरिंग द पास्ट कल्चर्स, ठीक है, एंड द सेम थिंग्स विल बी कंपेयर्ड विद द अदर नेशंस कल्चर. So by doing that comparative analysis, you get to know what are the common elements. Common elements है तो वो किस लिए है? Is all the human beings at same kind of mindset? Have they developed this? What is the reason behind it? If you see, in all societies there is marriage. ठीक है, almost all societies, even the primitive societies, even the tribal people, they have this institution of marriage. कैसे evolve हुआ होगा? सब लोग के अंदर like nowhere like you see there is no society or no culture which we have not explored so far. ऐसे कल्चर कोई भी नहीं है जहाँ पर मैरिज नहीं है, जहाँ पर फैमिली नहीं है. यूनिवर्सली दे आर एग्जिस्टिंग. इफ दे आर एग्जिस्टिंग यूनिवर्सली, उनका जेनेसिस कैसे हुआ होगा? हाउ इट हैज स्प्रेड टू, लाइक वी आर ऑल geographically like delineated. Look at India, look at Australia. Geographically we have lot of difference, ठीक है. तो कैसे हुआ होगा, ये ऑरिजिन कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चंस स्टडी करने के लिए टू फाइंड दोस आंसर्स वी डू दिस कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक. देन इंटीग्रेटिव मतलब इंटीग्रेट करेगा. इट विल ट्राई टू इंटीग्रेट विथ अदर स्ट्रीम्स. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टडी इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव, देन आई विल टेक द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, जो कंटेम्पररी सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट इट. व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, व्हाट आर योर इनपुट्स, व्हाट आर योर थॉट्स. लेट मी टेक देम, लेट मी टेक द हेल्प ऑफ देम, लेट मी एनालाइज फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, ठीक. So that integration is there. Not only that, suppose say if I want to study about the archaeological remains, ठीक है, जो पुराने people का remains, bodily remains वगैरह है, तो वहाँ पर भी we take the help of geology, geography, we take the help of history. History के थ्रू वहाँ पर कुछ stories होंगे, folklore होंगे, वहाँ से we will try to reconstruct, we will try to see how that element is going to fit in that history box, and from there we will try to understand what is its significance from the anthropological perspective, ठीक है. So that's why it is integrative in the nature as well. And apart from that, as I said, it is holistic because it takes each and every element into picture. So this is another nature, and because of this nature it is gaining lot of importance, ठीक है. वहाँ पर स्कोप में देखेंगे once again. So because of the holistic nature, integrative nature, cross comparison nature, it's finding lot many applications, it is bringing out lot many results and lot many facts, ठीक है. We are trying to reconstruct good number of things, ठीक है. So that is second nature. Then the third nature is, it is a field science. What is the meaning of field science? If you know some of the social sciences, so the researchers, the person who is studying that social science, he will be sitting in that, he or she will be sitting in the cabin where a data will be collected either by interviewing, either by questionnaire, ठीक है. उस तरीके से they will be collecting the data, and they will start comparing the data, they will start analyzing the data. But coming to anthropology, earlier anthropologists were like ऐसे काम करते थे, but in the present era the anthropologists, they actually go into the field. Have a look at this picture. This anthropologist, to study these primitive people, he actually went to their location, the field. It's not like a tourist. As a researcher, he went there, he stayed with them, he tried to understand their language, even learn their language, and tried to look at the customs, practices they are doing. Without judging them from his perspective, he was trying to understand why this practice is being conducted here. What is their
justification on that practice, such sort of field work. That field work tradition is also one of the important element of anthropology. That's why it is also said as it is a field science. Okay, is that clear? So this is the nature of anthropology. Now you understood what is anthropology, some of the definitions of anthropology and the nature of anthropology. Now let us look at the scope and uniqueness and the present relevance, the present importance of anthropology. See, all together I have merged because they are interchangeably can be used, because एक दूसरे के साथ link है. Let us look at them. Whatever the discussion that we have done earlier, let us try to look closely. ठीक, यहाँ पर देखो, सबसे first, what is the scope of it? It helps us in understanding and explaining the origin and development of the species. Human evolution कैसे हुआ है, origin कैसे हुआ है, evolve होने के बाद क्या changes आया है उनमें, and the present species, how they are like different or similar. Similarity we see to find what are the things that have been like coming similar together, ठीक है, and what are the differences, क्या क्या variations आया है, किस वजह से ये variations आया है, that can be understood and can be explained by the anthropology, particularly biological anthropology helps us. ठीक, apart from that, the past, present and future of the human beings can be studied. It is studied. ठीक है, past में कैसे थे, उनका society कैसे था, उनका customs कैसे था, then present में कैसे है, इन दोनों के बीच में compare करो. What are the similars, similarity, what is it, what is the similarity and what is the difference, that can be studied here. And what is the difference that is going to be there in the future, what is the trend that is happening now, and with this trend where we are going to end after say 100 years or 200 years or so. ठीक है, so it has that time scale totality. So that is one more scope of anthropology. Then it has a unique combination of holistic, इससे पहले अभी explain किया था holistic nature and historical nature. Like I said, अगर आर्कियोलॉजी बेसिस पे कुछ स्टडी करना है, you need the help of the historian, कि इनके बारे में बताना है, उसको वैलिडेट करना है. ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम पे भी जो इवेंट्स आपको मिलता है, लाइक प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री इज रिटन रिकॉर्ड्स, एक सीक्वेंस मैनर में जो हो चुका है पास्ट में, उनको एक सीक्वेंशियल मैनर में लिखना, दैट इज हिस्ट्री. ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना, दैट इज हिस्ट्री. लेकिन ये लिखना वगैरह जो है, रिकॉर्ड करना है, जो नहीं था उस टाइम तक, डेवलप नहीं हुआ है, उससे पहले भी कुछ हिस्ट्री था, दैट इज कॉल्ड जनरली प्री हिस्ट्री. और प्री हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स जो है, दैट इज रिकॉर्डेड बाय द मदर नेचर. इट मे बी ऑन द रॉक केव्स और इट मे बी ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ. स्ट्रैटोग्राफी करके एक टॉपिक आएगा आपको आर्ट एंड कल्चर में, जहां पर पढ़ेंगे different layers of the earth as different remains, bodily remains or some artifacts or ecofacts or so. By understanding them, by looking at them, by studying them, we can come to some conclusions related to that particular society. ठीक, ये वाला प्री हिस्टरी के बारे में भी. If you need that, you need an expert historical person. Similarly, a geologist is needed. ठीक है, अ बॉटनिस्ट इज ऑल्सो नीडेड समटाइम्स. अगर वहाँ का इकोलॉजी के बारे में आपको पता करना है, वहाँ का ट्रीज वगैरह उनका बिहेवियर क्या है, तो उस बेसिस पे भी वहाँ का पीपल का लाइफ स्टाइल वगैरह पता चलता है. दैट्स वेयर यू कैन इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेटिव नेचर इसलिए है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम एक्सपर्ट्स को लेकर आके वहाँ पर स्टडी करते हैं. देन कंपैरेटिव मेथड्स, एज आई सेड, क्रॉस कंपेयर करेंगे हम. ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई comparative methods are there. ठीक, then apart from this it also has sub branches. क्योंकि इसका स्कोप इतना है, applications इतना ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो सब स्ट्रीम्स, सब ब्रांचेस जो है वो भी ज़्यादा होगा. सो ब्रॉडली वी हैव 4 सब ब्रांचेस. उसके अंदर फिर सब डिविजन्स है, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर टाइम. क्योंकि हमारा 1.3 है, ये ब्रांचेस के ऊपर फोकस करता है, तो उसी टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा. तो ब्रॉडली यू हैव बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच टॉक्स अबाउट द ह्यूमन
biology, the anatomy and all. Then there is cultural or socio-cultural anthropology, which talks about the social aspect of the human beings. ठीक है. There is linguistic anthropology, which is the youngest stream nowadays. youngest stream है, जैसे लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ है. ठीक है. सी लिंग्विस्टिक्स अलग है, वहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि ग्रामर वगैरह, फोनेटिक्स वगैरह, उनका वर्ड्स वगैरह ये सब स्टडी करेंगे. बट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में वो नहीं है. लैंग्वेज कैसे जेनेसिस हुआ है, उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, सोसाइटी के साथ उसका क्या लिंक है, दीज थिंग्स आर द वंस वी विल बी लुकिंग एट हियर. ठीक है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में. देन आर्कियोलॉजी, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीम हियर. ठीक है, which is like digging the ancient remains and all and trying to reconstruct what has happened in those times. ठीक, that is your archaeology. Now in सबको मिला के nowadays there is one more evolution, that is application based anthropology. We will be applying the knowledge that we get from here to utilize the information for the day to day applications. That is applied anthropology. These are the major sub fields और सब ब्रांचेस अंडर एंथ्रोपोलॉजी. उसमें फिर सब डिविजन्स है, दोज थिंग्स वी विल स्टडी सेपरेटली. ठीक. देन इट हैज स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस, एज आई सेड. बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ भी है. ठीक है, एंड सोशल साइंसेस, फॉर एग्जांपल से इकोनॉमिक्स. ठीक है, और इट मे बी सोशियोलॉजी. ठीक है, और इट मे बी पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, ऐसे ही हर एक सोशल साइंस के साथ इसका लिंक है, क्योंकि देयर ह्यूमंस आर इन्वॉल्व. जहाँ जहाँ पर ह्यूमंस इन्वॉल्व है, एंथ्रोपोलॉजी बाग बाग क्या आएगा. अगर ह्यूमन है तो मैं हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई एम स्टडिंग अबाउट दी ह्यूमंस, होलिस्टिक स्टडी. आई डोंट वांट टू लीव इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ ह्यूमन. ठीक है, जहाँ जहाँ पर ह्यूमन है वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी विल कम, इट विल प्रेजेंट देयर. दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज ए strong links with these sciences like social science, life sciences like zoology, botany, इनके साथ भी, and even earth sciences, geology, study of rocks. ठीक है, and geography. ठीक है, study of earth, इन सब से related, climatology. ठीक है, इन सब से भी linking है. So that is one of the scope and uniqueness of anthropology. Relevance भी देखो, इन सब के साथ लिंक है तो एक दूसरे का मदद होगा. अगर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ फाइंडिंग मिला है, दैट विल गिव सम इनपुट टू दीज साइंसेस, एंड वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ है या कुछ फाइंडिंग हुआ है, द सेम कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एंथ्रोपोलॉजी. सो दैट इज हाउ रिलेवेंस वी कैन लिंक हियर. ठीक. देन अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव लाइक, लुक एट दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो. सॉल्विंग मेजर इश्यूज. अभी महात्मा गांधी जी का जो पीटर्स मरीजबर्ग में उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है, बैड एक्सपीरियंस. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रेसिज्म, अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आजकल भी दिखता है कई जगह पे. ठीक है, सो इट विल ट्राई टू लाइक इट हैज़ पुट लॉट ऑफ एम्फोसाइज, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ स्टडिंग ऑन इट कि क्या सच्ची में रेसेस एग्जिस्ट करते हैं. इज देयर ए सुपीरियर रेस, इज देयर ए इंफीरियर रेस, इज देयर सच कॉन्सेप्ट, is there a difference in the like intelligence based on the race. White people है तो गोरे people है तो are they having lot of physical abilities, lot of mental abilities, is it true. ऐसे करके बहुत सारा स्टडी करने के बाद finally it has busted the myth of racism. It said there is no such thing as a race. ठीक है, only the biological concept of race is existing. जैसे आप जो कह रहे हो social concept, it is not there. ठीक है, so that has been finalized and it has solved the major issue of racism. ठीक, इसीलिए आपका अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्या कहता है, रेस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे भी यही वाला बात होता है. ठीक है, रेसिज्म नहीं होना चाहिए. देन अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म? इट इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज दैट मेरा कल्चर जो है, मैं जो बिलीव करता हूँ, मेरा रिलीजन जो है, दैट इज सुपीरियर कंपेयर टू अदर्स. ये वाला जो बिलीफ होता है, ये जो एटीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म. जस्ट रिकॉल इन योर कॉलोनियल पीरियड, जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे आकर रूल करते थे, दे यूज्ड टू से दिस, इंडियंस आर सैवेजेस, दे डू नॉट नो द कल्चर, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, वी केम हियर टू टीच यू द सिविलाइजेशन. ठीक है, सिविक
मैनर्स कैसे होता है ये सिखाने के लिए हम आया है, क्योंकि आपका कल्चर जो है बहुत ही इन्फीरियर है, आपका रिलीजन जो है दैट इज इन्फीरियर, द क्रिश्चियनिटी इज द सुपीरियर वन, ऐसे करके वो वाला माइंडसेट के साथ आए थे. दैट माइंडसेट, दैट एटीट्यूड इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिसिज्म. अब एंथ्रोपोलॉजी ये स्टडी करने के बाद, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, कस्टम्स के बारे में स्टडी करने के बाद बताया कि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. There is no such thing as these ethnic elements are superior, these ethnic elements are inferior. ये वाला concept ही नहीं है. This is a myth. There is only like they have proposed one more concept called cultural relativism. मतलब हर एक कल्चर का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना इम्पोर्टेंस है, अपना फीचर्स है. अगर उस कल्चर के बारे में आपको स्टडी करना है, you have to respect that culture. You have to see the elements of that culture from the perspective of those people. So that is what given by cultural relativism. And cultural relativism, it has reduced the concept of ethnocentrism. ठीक है, कम कर दिया है. And it has helped in bringing that equality and preserving the cultures. Native cultures को preserve करने के लिए बहुत ही मदद किया है. ठीक. Then comes taboos, the prohibitions. क्यों है ये वाला टबू, किस लिए है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और उसका जेनेसिस कैसे हुआ है, उसका ओरिजिन क्या हुआ है. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टबू. दीज थिंग्स हैव बीन एनालाइज्ड हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट द डिस्क्रिमिनेशन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, रेसिज्म एंड ऑल. देन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है, रिलीजन बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, या कम्युनिटी बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट होना, या एथनिक एलिमेंट्स पे कॉन्फ्लिक्ट होना. Just I can give the example of that Hitler eliminating the Jews, saying that they are not the pure blood. ठीक, ऐसे वाला जो ethnic conflicts वगैरह है, उसका क्या reason है, and is there a really that kind of pure and impure races वगैरह ऐसे कोई concept है ये वाले से related. They have explained it and it has reduced such ethnic conflicts. Then रीजनलिज्म किस लिए होता है, सेपरेटिज्म किस वजह से आता है. तो इट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन कि क्यों वहाँ पर सेपरेटिज्म आ रहा है, रीजनलिज्म क्यों आ रहा है, वहाँ का जो पीपल है उनका बिलीफ क्या है, उनका मानना क्या है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एंड इट हेल्प्ड इट. ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे गवर्नमेंट्स को मदद मिला था बाय अंडरस्टैंडिंग द रीजनलिज्म. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वहाँ पर जाकर किस वजह से, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम को समझकर फिर गवर्नमेंट को बता देते थे. देन दे यूज टू मेक द ट्रूथ्स विद दोज पीपल. ठीक, तो दैट इज वन मोर थिंग विच इज हेल्प्ड बाय द एंथ्रोपोलॉजी. देन द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल पीपल हैव बीन लाइक हाईलाइटेड, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल है, उनका कल्चर कस्टम्स थोड़ा सा अलग होता है. दे डू नॉट इंटीग्रेट वेल विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. वहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज ए फील्ड रिसर्चर जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ मिंगल हो जाते हैं, उनका लैंग्वेज भी सीखते हैं, उनका कल्चर कस्टम्स के बारे में भी सीखते हैं. तो देन दे गेट द अप्रूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, एंड वहाँ पर वो पूछते कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, और वो वहाँ का जो प्रॉब्लम्स है विच इज़ लाइक टोल्ड बाय दोज पीपल एंड विच इज़ विजिबल टू दिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे कम एंड एक्सप्लेन इट टू द गवर्नमेंट एज एन इंटरमीडिएटरी. ठीक है. So that is how many of the tribal people's problems have been solved and solving, and we created, like if you see India में भी देखो, we created 5th schedule and 6th schedule in our constitution separately for the administration of tribals, to respect their culture, to promote their culture, to conserve their culture. We have taken such steps. ठीक है, तो ये वाला भी एक utility है, एक relevance है, you can say importance है. So these are all the some of the points. Apart from that, it also helped us in understanding the cultural relativism, the concept of it, and intra-group and inter-group violences. ठीक है, the concepts of like you know that एंडोगामी, एक्सोगामी मैरिजेस में होता है कि विद इन द ग्रुप शादी करना है या आउटसाइड द ग्रुप शादी करना है. ऐसे रूल्स वगैरह जो है किस वजह से आया है, ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ही मदद किया है. So these are some of the importances or uniquenesses or scope of anthropology. Apart from these, there are others. Like look at them. Okay. One is applied anthropology. As I was saying, anthropology has lot of applications. Wherever humans are involved, we are trying to study it, and we use that information
टू अप्लाई इट एंड ब्रिंग सम प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, ठीक। सो यहाँ पर भी देखो कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम, पॉलिसी मेकिंग पे। लाइक अभी जस्ट नो आई हैव गिवन यू फॉर एग्जांपल, एक माइनॉरिटी सोसाइटी है, माइनॉरिटी है, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा डिफरेंट है, उनका रिलीजन अलग है, तो उनका प्रॉब्लम्स क्या है, उनका कल्चर को कैसे आगे लेकर जाना है, उनका लैंग्वेज क्या है, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई स्टडिंग फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू मेक ए साउंड पॉलिसी फॉर द सेम। सो पॉलिसी मेकिंग में यूज होता है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी विल सी अंडर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी द एंटायर, लाइक इवन the honorable prime minister of then, Nehru ji, he has taken the help of Warrior Elwin, one of the anthropologists in those times. Thakar Bappa, he is Thakar Bappa, ठीक है, Gandhian follower है। He has become a voice of tribals in the Chotanagpur Plateau. उनको लीगली लड़ना कैसे है इन्होंने सिखाया है, उनके लिए इन्होंने लड़ा है, ठीक है। So this policy making, and not only this, nutritional balance, which is called nutritional anthropology, we all know अगर अच्छा खासा न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट नहीं लिया तो क्या होगा, माल नरिशमेंट होगा, वेस्टिंग होगा, स्टंटिंग होगा, या एनीमिया आएगा, या कुछ और डिसीजेस आएगा। तो नाउ डिफरेंट सोसाइटीज़ है, उनका कुछ बिलीव्स होते हैं, उस बिलीव्स की वजह से या उनका बायोलॉजिकल बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स है या जो चेंजेस है या जो वेरिएशंस है, उस वजह से वो पर्टिकुलर डाइट नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल American Africans who were kept in the hostels and all, those children they were not consuming milk. People thought कि उनका वो कस्टम है, इसलिए नहीं पीते हैं दूध, ठीक है। एंड मिल्क हैज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो देर वॉज ए कंसर्न, बट एंथ्रोपोलॉजी जब उनका स्टडी किया है, सो दे फाउंड दैट दोज चिल्ड्रन दे आर लैकिंग ए पर्टिकुलर एंजाइम कॉल्ड लैक्टोज विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क। वो वाला एंजाइम ही नहीं है, जब एंजाइम नहीं है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो दूध पिएंगे तो उनको क्या होगा, पेट खराब होगा या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वो डर के दूध पीना बंद कर दिया है, दैट इज़ द रीज़न। लेकिन उनका वो कैसे दूध वगैरह कैसे लेते थे, वो वाला रिसर्च पे गया है। देन दे फाउंड दैट दे नेवर टुक मिल्क डायरेक्टली, रादर दे मेड इट लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, और बना के उसके बाद बटर मिल्क या चीज़ फॉर्म में या कुछ और फॉर्म में बना के कंज्यूम करते थे। ये वाला स्टडी आया वहाँ पर, ठीक। तो ऐसे ही डिफरेंट लोकेशंस पे कुछ बिलीफ्स होते हैं, उनके वजह से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, उनका अल्टरनेटिव्स क्या है, दैट कैन बी वी कैन गेट इट फ्रॉम स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज अनदर एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन हो, माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा दैट विल हेल्प अस इन मेकिंग साउंड पॉलिसीज, साउंड स्कीम्स, ठीक है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बनाने में बहुत मदद करेगा। देन फोरेंसिक स्टडीज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए क्राइम सीन और सो, ठीक है, तो जहाँ पर फॉर एग्जांपल लुक एट इट, हियर देयर आर सम बोन्स, लाइक बहुत दिन हो गया था क्राइम होकर, नाउ द अथॉरिटीज, द पीपल, दे डू नॉट हैव एक्सपर्टाइज कि वो मेल का है या फीमेल का है, बच्चा का है या अडल्ट का है, ये पता करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये वाला नॉलेज जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उनके पास है। वो क्या करेंगे, उसको असेंबल करके उसका फीचर्स देखेंगे, द फीचर्स ऑफ द स्केलेटन, द फीचर्स ऑफ द अदर लाइक द एंटायर फेस एंड ऑल, दे विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट इट। हैव ए लुक एट हियर, देयर इज द स्कल, दे ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट, 3D रिकंस्ट्रक्शन method use करके the reconstructor, they said if the person would have been live, the person would have been looking like this. Then the authorities, the police, the investigation officers, they might look for this sort of person and they will recognize that person, and whatever the missing case or murder or whatever that is, they will be able to solve it. That is how anthropology helps in forensics, ठीक है। Apart from these, other techniques are also there, DNA analysis, fingerprinting, blood analysis, ठीक है, और even the teeth analysis, ठीक है, different things are there that can be applied by the knowledge of anthropology, okay. Apart from that, see, safeguarding the minorities and tribals, their rights, their culture, their language, उसको safeguard कर सकते हैं, ठीक है। For that you need the knowledge of anthropology and it is one of the applications of anthropology. Then paternity test, ठीक है, ये वाला अगेन यू कैन स्टडी इट अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप DNA
फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करके स्टडी करते हैं कि मदर यू नो you have the child but father you want to find whether there is an allegation or the father like biological father find करना है. dispute resolution जैसे उनका property है, properties dispute है, उसके लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए भी you need to find the legal heir of that person. For such a cases you can use the paternity test where the DNA matching will be done or blood group. ठीक है, it will tell who is not the father but not the who is the father. उसके लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करके फाइंड कर सकते हैं. दैट इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. देन स्पोर्ट्स में भी वी यूज द नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विच इज कॉल्ड किनांथ्रोपोमेट्री. मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बेसिस पे, फैट कंटेंट बेसिस पे, बॉडी बिल्ट बेसिस पे विच पर्सन इज गुड फॉर विच स्पोर्ट. ठीक है, ये वाला हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Nowadays we are actually engaging this particular topic in enhancing the ability of a person in sports. ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी बिल्ड पर्सन को अगर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए हम सेलेक्ट किया है या उनको ऐसे ट्रेन किया है, उनका न्यूट्रिशन हो सकता है, उनका फिजिकल ट्रेनिंग हो सकता है उस बेसिस पे, देन दैट पर्सन विल परफॉर्म वेल इन द स्पोर्ट्स एंड वी हैव लार्जर स्कोप ऑफ गेटिंग मोर मेडल्स. ठीक, so that is one more application. And then designing, as I already said, cockpit designing हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइन हो सकता है, या कार का डिज़ाइन करना है, उसमें ही सारे एलिमेंट्स लेकर आना है, उसके लिए भी वी कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन. एंड जेनेटिक्स से आजकल का जो टाइम पे जहाँ पर कोरोना वायरस का स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, सो इन दैट टाइम्स द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, इट इज़ गेटिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. वैक्सीन बनाना है या म्यूटेंट्स जो है, वेरिएंट्स वगैरह जो आ रहा है, उनके बारे में स्टडी करना है, यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन. एंड सिमिलरली कौन सा वैक्सीन या कौन सा दवाई किस पे कैसे काम करेगा, क्या असर रहेगा, फॉर दैट आल्सो यू नीड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक्स. ठीक, सो दैट इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. लुक एट द एप्लीकेशन, दीज आर ओनली सम लिमिटेड वंस, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी. ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड में है, इकोनॉमिक फील्ड में है, बहुत सारी जगह पे है. ठीक, देन अपार्ट फ्रॉम दिस action anthropology. What is the meaning of action? Like directly action में involving in the action. Like the expert, the anthropologist himself or herself, they will involve in particularly applying the concept that they have studied, that they have learned. ठीक है, वहाँ पर directly आएंगे. For example, ताकर बप्पा is an example of action anthropology. ठीक है, he is an anthropologist like who studied about the tribes, who helped the lot of tribes. ठीक है, उनके लिए इन्होंने, उनके लिए he has raised his voice, he became the voice of those tribal people and he appeared in the legal force. ठीक है, तो वहाँ पर जाकर उनका पॉइंट्स वगैरह राइज करके बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है. सो दिस इज वेयर, दिस इज अनदर यूनिकनेस, लाइक यूनिकनेस ऑफ दिस स्ट्रीम. द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दे आर गोइंग टू टेक द एक्शंस. ठीक है, दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द एक्शंस. ठीक है, देन द यूनिक अप्रोचेस दैट इट हैज, like I was saying, see this is like paternity test और diseases, genetic diseases वगैरह आया है, वो कैसे किससे किस तरफ जाने का चांस है. ठीक है, वो वाला स्टडी करने के लिए, उनको रोकने के लिए we use the information of genetics. ठीक, then the unique approaches of anthropology like participant observation, like the anthropologist, the researcher will be participating in the local community. जहाँ पर उनको स्टडी करना है, वहाँ पर जाकर एक मेंबर के जैसे वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा. तो जब as a member of that society is behaving or she is behaving, they get the extra information. They will not be judging from their own culture, rather they will be looking at their culture from the perspective of that locality, from the perspective of that society. That gives the extra information. ठीक है, unbiased information, unbiased observation can be done there. ठीक, then case studies, कुछ case studies लेते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं. ठीक है, उनको भी क्रॉस कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव मेथड्स में. and cross cultural studies which I have given the example of American society and Indian society, तो वो वाला भी करेंगे. These are all the unique approaches and unique methods. ठीक, look at this diagram. The Comanche chief has been invited by the then president of America, Barack Obama. ठीक, so that is duly representing that particular tribe and keeping the culture on. See, that person came in the traditional dress. ठीक, so these are all the applications, relevances or uniqueness
and scope of anthropology. So far, any doubt? Okay, thank you. We'll go to the next one, that is development of anthropology, which is the last of this particular lecture. See, as a stream, how it got developed. So what are the initial stages and then final stages, how it got developed? Let us look at them. See, if you see sociology or psychology or history or geography, they have a long, like almost more than 200 years of history of them. They have been like very old sciences. But anthropology, it is more recent one. Like whatever the development in anthropology has happened, it happened in the 19th century, most of the development. Usse pehle, it was very like, there is not even like a particular stream like anthropology. So बहुत ही कम टाइम पे इतना नो frequent and इतना important बन गया है because of its scope, ठीक है, its utility. Now in this, a person called T.K. Penniman, he has given different like a classification for development of anthropology, under which he said that in the world the anthropology developed in 4 stages, okay, or 4 periods. So this, he has this proposal of these 4 period development of anthropology. He has given it in book called 100 Years of Anthropology. 1935 में दिया है, just 1935 तक एंथ्रोपोलॉजी का 100 years हो गया. इसका मतलब है कि it started from 1835. उससे पहले formally it was not there, at least not as a separate branch. So it started from 1835. Now we are in what, 2021? ठीक है, close to say not even 200 years, less than 200 years. इतने में इतना strongly develop हो गया है. Many institutions, many universities, they have the anthropology as a separate branch there, as a separate department there, and its applications भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है. If it is so, what Penniman has given, what are the 4 periods that he has given? He said that the period before 1835, this period he called it as a formulatory period, that is the initial formation period where the anthropology was taking like a bud. Okay, it was taking the initial stages. Then 1835 to 1859, he said this period is a convergent period. मतलब यहाँ पर जो different thoughts जो है, different schools जो है, they started converging to a single point. All of them are converging together, and lot of development is happening. All of them are conforming to one particular thing, that is the development of anthropology. That is this period. Then the constructive period from 1859 to 1900, the colonial period. ठीक है, वहाँ पर colonization वगैरह हो रहा था. Then the contribution of different travelers, different administrators, that comes here. Then the another one is 1900 onwards, which is called critical period, where lot of development has happened here. ठीक है, even the present time you can put it under critical period according to Penniman. ठीक है. So let us look at them one by one briefly. The first one is formulatory period, that is all the period related to anthropology before 1835. ठीक है. So इसमें देखो, it has like longest period in the history of anthropology, but anthropology is not developed as a particular stream then. So यहाँ पर there were like Greek historians, philosophers and the naturalists, they are the ones who have contributed. For example, Herodotus, who was in the 5th century BCE, he was considered as the first anthropologist because he was the first person who has written little bit about or studying about man. Apart from that, some of the Greek, Greek philosophers, ethnographers like Plato, Aristotle, Socrates, these guys also contributed during this time period. Of course, their thinkings, their writings are not particularly restricted to anthropology, but different aspects of humans, and one of them is anthropology. Apart from that, like you have some of the travelers like Marco Polo, Vasco da Gama, who visited India. Such travelers also, they have contributed towards the rich
richness of or growth of anthropology. क्योंकि जब वो ट्रैवल करते थे डिफरेंट लोकेशंस पे फॉर ट्रेडिंग पर्पस, दे यूज टू एक्सप्लोर दोज लोकेशंस, दे यूज टू मेक ए नोट ऑफ दोज पीपल हु आर लिविंग, उनका कस्टम्स क्या है, उनका ट्रेडिशंस क्या है, ठीक है. सिमिलरली आपका हिस्ट्री में ट्रैवलर्स, ठीक है, मेनी अरब ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स केम टू इंडिया, दे हैव रिटन ए डिटेल नोट ऑन इंडियन सोसाइटी. इसी तरीके से ये लोग भी पर्टिकुलर पीपल जहाँ पर वो जाकर विजिट कर रहे थे उनके बारे में डिटेल नोट्स किया है. दोज हैव बिकम वैल्यूबल सोर्सेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग द 16th and 17th century, जब क्रिश्चियन मिशनरीज वर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, and they were like educating the masses, they were bringing that modern education and they were spreading the Christianity. During those times, these persons like Christian missionaries, they have traveled to different parts of the country and they have contributed a lot, क्योंकि वहाँ पर ये Christian ideology spread करने के लिए they need to know the local people, उनका belief क्या है, उनका culture कैसे है, तभी तो उनको बता पाएंगे, उनको कन्वर्ट कर पाएंगे. फॉर दैट पर्पस दे स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट देम, द नेटिव पीपल. दैट इज आल्सो ए कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग दिस फॉर्मुलेटिव पीरियड. सो एनी डाउट्स हियर टिल द फॉर्मुलेटिव पीरियड? इफ नो, लेट अस गो अहेड. द नेक्स्ट पीरियड इज द पीरियड ऑफ डार्विन, यू कैन से द कन्वर्जेंट पीरियड. सी ही इज डार्विन, द पर्सन like who has given the theory of origin of species. Like he has taken many expeditions. One of the expeditions to Galapagos. Galapagos is if you see South America, ठीक है, South America का मैप देखेंगे, यहाँ पर there is an island. That island, isolated island, it is called Galapagos. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा rich diversity, बहुत सारे species है. तो वहाँ पर भी जाकर वो species कैसे origin हुआ है, उनका क्या वेरिएशंस है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस वेरिएशंस, इनके बारे में बहुत कुछ लिखा था इन्होंने. ही हैज़ इवन रिटन वन बुक कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859. ठीक. सो टिल देन, टिल दैट पब्लिशिंग ऑफ द बुक, वट एवर द कंट्रीब्यूशंस डन बाय वेरियस पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स, ठीक है, चार्ल्स लायल और विलियम स्मिथ, दीज गाइज they have written, they have given divergent viewpoints. But later, once the book on the origin of species got published by the Darwin, then these theories, like जितने भी different diverging theories है, they started converging together. ठीक है, they started investing, scientific investigation was established. They were like developing Darwinism, जो हम पढ़ेंगे इसी में Darwinism, प्री डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम. ठीक है, इससे पहले लमार्किज्म वगैरह भी स्टडी करेंगे हम. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक. देन द नेक्स्ट पीरियड इज कंस्ट्रक्टिव पीरियड. सो दिस इज वेयर द एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टेड डेवलपिंग एज ए सेपरेट डिसिप्लिन. टिल हियर एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक सेपरेट नेम, सेपरेट डिस्टिंग्विशन नहीं दिया है. Either it was studied like social science or biological science or some sort of science, but not a separate. इससे पहले अगर anthropology मतलब it may be archaeology, it may be digging of the things, ऐसे करके एक thought था. But from here onwards, it started developing as an independent discipline in many universities, and many people like E.B. Taylor, James Fraser, Henry, then your L.H. Morgan, ऐसे different जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे स्टार्टेड कमिंग अप विद देयर आइडियाज, विद देयर थ्योरीज. They started explaining like what is ethnology, what is prehistory, what is social anthropology, what is physical anthropology, how they are connected. ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट हुआ था. That's why there was a fast spread and development of anthropology during that period. Apart from that, this is a period where there is lot of colonization is happening. जो colonial administrators जो थे, so they wanted to like उनका imperialistic goals था, वो expand करना चाहते थे अपना locations को. They want to maximize the profits and all, maximize the colonies. उसके लिए क्या करना होगा, वहाँ का local people के बारे में study करना होगा. They have to understand about what are the cultures of those local people, language of those local people, and they started publishing the same in journals, in gazettes. So that has also become important source for these many anthropologists. They started cross comparing the cultures, the societies. So that is one more contribution given by these many colonial administrators. India में भी
there are many administrators like Hawkins are there, Cunningham is there. Archaeological Survey of India was established to study the societies. ठीक है, ऐसे बहुत सारे British officers जो थे, for example your census started during those times. Census is what? They will be studying about the demographic profile of Indians, ठीक है, or any particular society. So that also contributed towards the studying of humans and towards the anthropology. ठीक है. So this is the third phase, an important phase. Then from 1900 onwards, whatever the phase that is there, that is called critical period, critical phase. So what has happened during these times? See, the contributions, like more and more contributions started coming up, and during this 20th century, the concept of genetics developed, the concept of DNA came into being, the concept of like biological aspects. So as a result of it, the scope of anthropology, it got enormously expanded. ठीक. So during this time, not only this, various anthropological thoughts, various schools, for example, functional school, diffusion school, or culture and personality school by Margaret Mead and all, those peoples, they started saying कि there is a link, एक person का personality जो है, how that person behaves, what is the personality of that person, it has a close link with the culture of that particular person, where that person is being reared, ठीक है, what practices have been taught, तो उस बेसिस पे उनका कल्चर वेरी करेगा, ऐसे करके ये वाला पॉइंट बताया. देन स्ट्रक्चरल स्कूल, इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, कैसे एक स्ट्रक्चर वाइज तो कैसे डेवलप होता है कल्चर. सो एंड देन सिमिलरली देयर इज फंक्शनल एस्पेक्ट, ये कहते हैं कि कल्चर का कुछ फंक्शंस होता है, उसको फुलफिल करने के लिए कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस. यहाँ ये कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. ऐसे डिफरेंट थॉट्स केम इनटू बीइंग. सिमिलरली मैलोनोस्की जो है, ही स्टार्टेड लाइक फील्ड एक्सपीडिशंस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह लेना. सिमिलरली रॉडक्लिफ ब्राउन, इन सब के बारे में वी विल स्टडी अंडर एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज. ठीक है, वहाँ पर स्टडी करेंगे. तो वहाँ पर वी हैव दिस पर्टिकुलर पर्सन्स एंड देयर थीरीज अलॉन्ग विद द केस स्टडीज, like what they have studied, what are their like outcomes, what they have noted down, what are the practices that they have come across. ऐसे बहुत ही interesting है. For example, we will talk about Andamanese people and different practices they do. ठीक है. Similarly, we will be talking about Balinese people, the cockfights of Balinese, Melanesian people, Polynesian people. ठीक है. ऐसे वियतनाम का कुछ people है, उनके बारे में. The tribes of America, the tribes of South America, the tribes of Africa and the tribes of like Siberian region में जो लोग हैं उनके बारे में, ऐसे उनका different practices के बारे में we will try to study here. ठीक है. So this is how the development has happened in anthropology. So what are the four things that we have seen? You have four branches here. The first one is formulatory period, like formulatory phase. Second is convergent, another is constructive, then finally critical period. With that, your discussion came to an end. Thank you very much for your patience, and if you have any doubts in this particular one, like this entire particular concept, our learning objective, as I said, okay, today we are going to learn about these things: the meaning of anthropology, nature of anthropology, scope, uniqueness and relevance of anthropology, and development of anthropology. इसमें कोई भी doubt है, I'm open to your questions. Please go ahead and ask me your questions. Yes, I hope you enjoyed the lecture, and if you have any doubts, if you are not able to like put it in the chat box, you can approach us. Even you can comment in this YouTube session. I'll personally look into it. Okay, we have one doubt. Shubham Chakravarti, class was great sir. Had to ask that whether this class is going to continue every day at 9 p.m. Initially it will continue at 9 p.m. Then we have some time reschedulings because
Jatin sir also has DNAs, DAEs, such sessions are there. So we will try to reschedule the timing. Thank you very much. अच्छा लगा आपको क्लास? ठीक है. Shubham, is everything like, do you understand everything? Is there any doubt or anything? Like इससे related कुछ practice questions जो है, this is proper, like we will be entering into the proper anthropology. अगर इससे related answer rating के लिए questions है, I will start giving them. You can get them from the team. You can ask them. ठीक है? Yes. Any other doubts? Okay. Thank you very much, guys. See you in the next session. Have a nice day. Good night.